The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay, so good afternoon, everyone, and welcome to the session. I can see a lot of people who are old have attended this session. Well, I have no problem. So I just want to give a disclaimer to everyone. So this is supposed to be the first session of reasoning under the vertical of reasoning. So anybody who has attended this session earlier or has attended my earlier classes on reasoning and DI based on reasoning, etc. They might feel boring and repetitive. तो मेरा उनको सजेशन है कि वो सेशन छोड़ दें और कुछ और वर्थवाइल करें, जैसे कि एलओडीज या बुक में से प्रैक्टिस करें. ड्रिप वीडियो क्या होता है यार? व्हाट इज ड्रिप वीडियो? ड्रिप से तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है, वो जो लगाते हैं ना ग्लूकोज. ड्रिप वीडियो क्या होता है? टेल मी द नेम ऑफ द वीडियो. विच टॉपिक हैव यू वॉच्ड? हाँ हाँ, फिर नहीं जरूरत है अनमोल, जा सकते हो. प्रियदर्शी कुमार एंड एवरीबडी एल्स, आई जस्ट सेड दैट I think people from other batches, older batches, have also joined this session. So there is a disclaimer that you might feel bored in this session because we have done umpteen number of questions on this earlier. So you might want to leave this and do something else. So this session is will be done keeping in mind everybody who has joined us new and who has not done anything in reasoning. Okay? नहीं सुमित, डाउट अभी नहीं कर सकते. ये पहला सेशन है, फिर वो लोग बच्चे क्या सोचेंगे. डाउट बाद में अलग जगह करेंगे. ओके. नहीं, वेन डायग्राम का डाउट अभी कैसे कर ले? इन लोगों का पहला क्लास है रीजनिंग का, वो लोग क्या समझेंगे क्या चल रहा है? ना उन्होंने क्वेश्चन देखा है, ना उन्होंने क्लास किया है. अलग जगह करेंगे कहीं. हम्म. ओके. So, guys, the name of the topic today is ranking and arrangement. No, no strategy, just topic. Pranjal, no strategy, just topic. Strategy की अलग classes होती हैं, and I think Sharma sir takes enough classes to tell you the strategy. अब मैं भी वही सब चीजें आपको बताऊं तो why reinvent the wheel ना? Amish Gupta, yes. I will try to. Prerika, I will try to. So the thing is that ऐसा क्या है कि earlier we used to have a different class on linear sequencing, as you can see, linear sequencing or linear arrangement, a different class on circular arrangement, a different class on double-ended distribution, but that is for the people who joined us in December or January. Now you guys are joining in the middle of April, so अब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते. So you have videos, you can watch the videos anywhere you want. So we will try to squeeze in without losing out on any important thing. Okay, so I will try to cover everything. Let me be a little faster and you will understand everything. Don't worry. Just a little bit of effort from your side that I want is, please do not check any WhatsApp message, any Instagram or Facebook notification for the next 90 minutes. Please. अगर आप सिर्फ इतना करेंगे तो मेरे ऊपर, पूरी क्लास के ऊपर और आपके खुद के ऊपर बहुत आसान होगा. कोशिश करेंगे श्रवण, कोशिश करते हैं. ओके, so सबसे पहले लीनियर सीक्वेंसिंग. So what happens? Linear sequencing, or popularly known as seating arrangement. तो seating arrangement questions जो हैं वो कैसे दिखते हैं, मैं आपको एक लुक दिखा देता हूं. I'll just show you how a seating arrangement question looks. Please see this. 7 books, Hindi, English, physics, chemistry, blah 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 blah. There are 4 pointers of instructions.
following which you have to make a final arrangement on the basis of which you have to answer the questions. ये है इधर आगे भी. These are the questions. Okay. So you just see what happens generally is that when you see a question like this, you start making the arrangement on the rough, on your rough work or rough page. And since you are not able to, if the question is even a little bit difficult, little bit complicated, like this one, this is an average level of difficulty. This is not an easy question, but this is not too difficult either. Okay, so you read the first line, you are not able to place. जैसे आपने एक question पढ़ा, you see that there are 7 books placed from left to right. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आपने बना लिया. Now first thing is physics book is placed to the left of math. Where is math book? How left is physics book? You have no idea. So you have to just pass it. फिर अगला पढ़ेंगे. There are exactly 2 books between history and geography. Okay. Where do I put history? Then dash dash geography. Is it first and fourth? Is it second and fifth? Is it third and sixth? Is it fourth and seventh? I have no idea. Then you read this. There are as many books to the left of maths as to the right of maths. Okay, the maths is in the middle. Then again, maths को पढ़ के आपको physics याद आया. So what people generally do, they keep shuffling between the statements, and slowly and gradually, when they are not able to fill out the places very fast, they start heating up. दिमाग गर्म होने लगता है, and the frustration starts growing, and because of these feelings the question appears more and more difficult. Is my voice low for everybody? Aryan Kumar just reported that my voice is low. Aryan, I hope you want to say. नहीं यार, नहीं problem है. रुको, let me write to him. Let me write to him. यस, कंटिन्यूइंग. तो मैं क्या कह रहा था कि जब आप जल्दी जल्दी भर नहीं पाते ना, when you are not able to fill out all these places fast, so this frustration starts growing exponentially, and eventually you are not able to solve the problem, and after you have spent 5, 7, 8, 10 minutes, you feel that you are a loser because you have lost time, you have not even done a question, and you feel that emotional loss also, and that hampers your performance in the other questions also. So what happened here is a management problem. Okay, because of which we have to start from the basics. So what are the basics? You have seen the question. शौनक वोरा क्यों अटेंड कर रहे हो यार? ये और कोई काम नहीं है? अच्छा काम करो जाके. कोई क्यों इस क्लास में आ गए हो? मतलब I'm sure I'm really sorry to be so rude, but you don't deserve to be in this class. You don't belong here. जाइए कोई और काम करिए. LOD2 लगाओ कहीं पे जाके. समझे? चलिए. यार कल की क्लास मेरे से मिस हो गई बिकॉज एक तो वो एडेड क्लास थी, इट वाज नॉट मेंशन्ड इन माय टाइम टेबल, एंड आई हैव ओनली वन रेफरेंस पॉइंट, द प्रिंटेड टाइम टेबल दैट इज सेंट टू मी, और कोई भी एडिशन होता है तो मैं वो भूल जाता हूँ. वो प्रिंटिंग में मेरे पास नहीं था, सो जस्ट फॉरगॉट. इट वाज कंप्लीटली माय फॉल्ट, बट दैट वाज आल्सो अ मैनेजमेंट इशू. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन टच करेंगे ना सलूजा. ओके, प्लीज सी, लेट अस फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन दिस. So generally, what kind of statements do you see in these questions of seating arrangement? These kind of statements: A is 2 places to the right of B, B is to the left of Q, there are exactly 2 persons between X and Y. These are the kind of statement that you saw in that question also. So my uh, solution to the management problems is that you try to convert every information which is given to you in language into your own language of symbols. इसके बहुत फायदे होते हैं. I'll tell you. So once it is written A is 2 places to the right of B, you don't make the entire arrangement.
आप सिर्फ इस चीज को मेंशन करिए, A is 2 places to the right of B. B, right of B is this. Okay, 2 places to the right of B will be this or this. Which one do you think? पहले दूसरे में से कौन सा सही है? A is 2 places to the right of B. First one or second one? What do you vote for? Divided opinion. I'm getting people have been divided. People have divided themselves automatically. So that is why we need to do this. So it's the first one which is right. Okay, not the second one. ये देखिए, to the right of B, A is 2 places to the right of B in the first. A is 3 places to the right of B in the second. So first one is correct. Okay, A is 2 places to the right of B. So it has to be the first one. Okay, anybody who was thinking second was wrong. Please make it right. Okay, तो ये सोचिए, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बेसिक्स. अगर आप यही चीज गलत समझेंगे तो क्वेश्चन तो फिर आगे सही हो ही नहीं सकता. दैट इज व्हाई वी नीडेड दिस क्लास फॉर पीपल who are just starting. Okay, P is to the left of Q. Generally, people have this presumption that P is to the left of Q, Q के left में. So they write P बिल्कुल चिपका के. They make P sit adjacent to Q. While if you read this word, police, ठीक है, this word police. So P is to the left of O, correct. P is to the left of L also, not wrong. P is to the left of I also. P is to the left of E also. So जहां अगर लेफ्ट की बात की गई है, you don't know how far in left. Okay, so once the question said P is to the left of Q, you don't have to presume that P and Q are adjacent to each other. They may or may not be. इसके लिए मैं क्या arrow use करूंगा? ये I will write it like this so that this arrow will always remind me that P may or may not be immediate left of Q. चीज मैं आपको बता देता हूँ. ये बढ़िए. These are the words that suggest you the proximity: immediate, next to, consecutive, together, adjacent. These are the words. Unless one of these is mentioned, you will not take them next to each other, consecutive, together, adjacent, immediate. Okay, the immediate word was not written. That is why you will take these to the left of Q like this. हो सकता है उनके बीच में दो तीन लोग भी. There are exactly two persons between X and Y, which is okay. But I will write it like this: X dash dash Y. Looks good, but incomplete. Why? Because they are replaceable. So it could be X dash dash Y or Y dash dash X. Any one of them would be equally good. There are two persons between X and Y, but it is not mentioned who is to the left, who is to the right. So you have to take care of that also. Because otherwise, the questions like how many arrangements are possible, etc., may go wrong. So this arrow will always remind me that the replacement is possible. M and N are next to each other. Very similar. You will write it like this. नीचे दो dash बना देंगे so that their seats, their places look adjacent. But you will still place this double-headed arrow, which always tells you that they are replaceable. M could be on the left and could be on the right or vice versa. Okay. अब मैं आपको दिखाता हूं कि how does it work in your favor? How does it work in your favor? तो पहले एक इजी क्वेश्चन करते हैं फटाफट, उसके बाद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जो हमने अभी देखा था. Read this please. Just 2 to 3 lines of set. 5 friends left to right. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, what I'm going to do, I will just try to convert everything written here into my language of symbols. उसका फिर मैं फायदा बाद में बताता हूँ. Not necessarily in this order. Okay, this is done. A sits to the left of B. A sits to the left of B.
Who, meaning D sits to the immediate left of C. Okay, D sits to the immediate left of C. There is exactly one person between B and E. Okay, there is exactly one person between B and E. I hope you agree with this. अभी क्या है? I don't need to read these shrinking lines. अब जो है मेरे पास यहाँ लिखा हुआ. So two major benefits. One, you do not have to read again and heat up your mind. Second, when you look at the symbols, you can see two, three things at the same time. But when you are reading, you can read only one statement at a time. Okay, आपका concentration एक ही जगह रहता है. Only at one place. Now you can concentrate only at one place. There everything is written and you have to make your arrangement. So now see, these are the five people A, B, C, D, E. Who do you think will be between B and D? It cannot be D or C. It has to be A. Okay, यही है reasoning. Okay, so B, E with the replacement and A, D, C. This is our final arrangement. We have to now answer the questions based on this. So first question, who sits at the extreme left hand cannot be determined. Because don't forget the arrow, because it could be B or E. How many arrangements are possible? Two arrangements, as you can see. It could be B first or it could be E first. Hmm? Who sits at the extreme right hand? Now that is fixed. If B is to the right of A, okay, these kind of questions come with an extra information which is only valid for this question. So B is to the right of A. So for this question, the unique arrangement would be this. Now who is at the immediate left of B? It's B. So B becomes the answer. Okay, now tell me the problem, if any. आसान था ये वाला question. Okay, so you saw the importance of converting language into symbols. अब हम लोग करेंगे tough question, जो हमने अभी देखा था. अच्छा, by the way, sometimes I use these Hindi fillers. If anybody, one of some of our South Indian friends might not approve of this, so please let me know that you are not comfortable me speaking even Hindi fillers. Everything important I speak in English, okay? Yes. So you take your time, guys, and very only silently I will just convert these language into symbol. I'll not speak anything. You take your time, and I'll solve later with you.
No. Left does not mean immediate left. We have already talked about it. चलिए काम करते हैं इसके ऊपर. So see, I know that some of you might need a little more time to solve. तो देखिए अब इसके बाद आपके पास you will have your exercises, handouts, books to practice n number of questions from. अभी क्या है, I only wanted you to get the hang of it. That you have read the question, what kind of problems are you facing? Psychological problems, the dots are not getting connected, you're not able to move faster, etc., etc. How the tips given by me are helping you or not able to help, all these things. So abhi kya hai, see, there are these 4 points that I have converted into my language of symbols. The third point is right here, so which means third point meant that maths book is in the middle of the arrangement. The other three I have mentioned here. Now I don't need to read this. ये सब नहीं पढ़ूंगा मैं, कोई फायदा नहीं, मेरे पास है सब कुछ यहाँ. Okay, so related to maths book, there is this point that physics book is to the left of math, but to the left of math there are three places. Hmm? To the left of math there are three places. How maths is between, दिव्यांश देखिए लिखा हुआ है, जो ये जो चीज लिखी हुई थी वो पढ़िए. Third point, read this. There are as many books to the left of math as to the right of math. है ना? Both sides, either side, same number of books. So it has to be in the middle. Okay, so maths book is in the middle. So let me just number the places. So maths book is in the place number 4, which is the middle place. Now physics book could be at 1 or 2 or 3. I don't know where. But physics book will occupy one of these three places. अभी मैंने ऐसे हवा में लिखा. I don't mean at 2, at place number 2. I mean somewhere on the left. Okay. Now history dash dash geography. Let us talk about this, because we cannot talk about Hindi English. Hindi English could be first, second, third, fifth, sixth, seventh, a lot of possibilities. So let's leave it. Let us talk about history and geography. There are not many possibilities for history and geography. You just tell me, can history or geography book be placed at first number or seventh number slot? Is it possible? नहीं ना. History or geography book cannot be placed at first number slot because the other one will occupy fourth position, which is already filled. Similarly, not at 7. Okay, then there are only two possibilities. Either they occupy 2 and 5, or they occupy 3 and 6. Okay. 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 So now 2 and 5, 3 and 6. इसका हम क्या करें? Let us talk about this. मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं. Okay. Yeah. Okay. So one thing is for sure, that history, geography, both the books cannot be placed on one side of maths. This is for sure. Okay. Anything coming out from my mouth, if you don't approve of it, please let me know at that point of time. Do not wait for the entire thing to be over, because after that I'll not be able to explain to you. I'm telling you bluntly and strictly. Okay. Not everything can be written, you understand. So एक भी लाइन, एक भी फ्रेज जो मेरे मुंह से निकलता है और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, स्टॉप मी देन एंड देयर.
I have your chat box opened here on the right bottom of my screen. आपको नहीं दिख रहा है तो उसमें आप तुरंत लिख दीजिए सर प्रॉब्लम, ठीक है, एंड डोंट रेज योर हैंड बिकॉज दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू गो एंड सी हु हैज रेज्ड हैंड, और कभी कभी लोगों से गलती से भी हो जाता है. यू हैव टू राइट. ओके, ओके, कंटिन्यूइंग. So we have seen that history, geography, both these books cannot be placed on one side. So we are sure that one of the two books will be placed on the left and the other will be placed on the right. I don't know what places, but एक book maths के left में आएगी, दूसरी maths के right में आएगी. So now we come to the conclusion that there are two places reserved on the left of maths, one for physics and one for history or geography, which helps me to understand that this Hindi English pair has no chance on the left of maths. हाँ जी हर्ष, तो मैंने फिजिक्स को लेफ्ट में ही लिखा है, मैथ्स के राइट में तो लिखा नहीं है. क्या प्रॉब्लम क्या है वो बताइए. इमरान, सिर्फ आपको है वॉइस लैगिंग इशू. कोई भी चीज जो अगर मासेस को होती तो मैं उसको तुरंत उसके ऊपर काम करता हूँ, तो अगर सिर्फ आपको है इसीलिए जो है तो एक बार री लॉग इन कर लो, इंटरनेट कनेक्शन देख लो, डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो, ऐसा कुछ कर लो, हो जाएगा. उत्कर्ष नो. अरे मैंने 3 पर फिजिक्स नहीं लिखा है दोस्त. व्हाट डिड आई से? आई देखो, मुझे 3 पर फिजिक्स लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, नॉट इन द एयर. सो आई एम ओनली टेकिंग एन आइडिया. आई डोंट नो वेयर एच जी इज वेयर. आई हैव नो आइडिया. ओके, सो ये हवा में लिखा है, अभी 3 पर नहीं लिखा है फिजिक्स. ठीक है, और दूसरी चीज आप भूल गए हैं कि फिजिक्स मैथ्स के लेफ्ट में, इसका मतलब फिजिक्स 3 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है. यू हैव टू नो दैट. कार्तिका रविचंद्रन, you should leave this class. If you think that you have done this question, this is for the beginners, not for the repeaters. Okay, you should leave this class because we will do all the questions that you have already done. Okay, this is the class for the new joinees. Yes. Okay. So what I have written in these circles is not final arrangement. This is my way of managing my own psychology. Okay. Now I repeat. I said that Hindi English have no chance on the left of maths. Hindi English will be on the right of maths. Now ये सब मिटा देता हूँ. Hindi English. If I place Hindi English on 5 number and 6 number, suppose they have to be placed together. Suppose as a hit and trial, I place Hindi English on 5 and 6. Then what would happen? The history geography book has to come on 7. Is it possible? Not possible. We have already talked about it. So all these eliminations lead me to place Hindi English on place number 6 and 7. That is final now. Okay, Hindi English place हो गया. Since geography book is not allowed adjacent to Hindi or English, so it has to be history book then. The moment history book is fixed, dash dash करके geography book is also fixed. So we have done this, we have done this, we have done this. Nothing else left for me from the question side. Then I have only one thing to do now. What? Place physics and chemistry with the ambiguity. Because in both the cases, physics will be to the left of maths. चाहे उसको आप 3 पर रखें, चाहे उसे आप 1 पे रखें, physics will anyway be on the left of maths only. So this is my final arrangement with a little bit of ambiguities. So as you can see, there are 2 such arrows. So 2 into 2, there are 4 arrangements possible. You can even write down these arrangements, but there is no need. Okay, so there are 4 arrangements possible. First question answered. Okay, which book is at the extreme left end?
You have to mark physics or chemistry. Don't forget the arrow. Hmm? Which book is at the extreme right end? You have to mark Hindi or English. Don't forget the arrow. Which books are on either side? Either means each. Which books are on each side of both sides basically? Basically both sides. So physics and chemistry, right? Not or. You have to understand the difference between and or. So here it will be and. Yes, yes, Amish. Correct. Ritesh, no, you can leave. You should leave, rather. Anybody who has seen any such class in the past should leave this. वैसे ही दो दो क्लासेस और हैं, कितनी क्लासेस अटेंड करोगे, खाली क्लास में ही रहोगे. ओके, फाइन. कैट क्वेश्चन करें. वैसे देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट वी डू. ओके, यस दिस वन. वी सी दिस. पूर्वा पांडे जी, इंटरनेट भरा हुआ है ऐसे क्वेश्चन से. और आप किताब भी खरीद सकते हैं. आजकल तो ई बुक्स भी मिलती हैं. सर की खुद की बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. कोई भी किताब उठाइए और सॉल्व कर लीजिए. सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीक्वेंसिंग, रैंकिंग अरेंजमेंट, एनी सच नेम वुड बी देयर. हाँ पूजा. नाम पे मत जाओ. नाम पे मत जाओ. अरेंजमेंट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज that a lot of people have different perception about arrangement. Even the table questions they called arrangement questions. Like मैंने career launcher में पढ़ाया है, तो career launcher में there is a handout which is named arrangement, and there are also questions which have no arrangement in it. They are basically distribution, who has what, but they also call it arrangement. So different people have different perceptions about the word arrangement. तो इसलिए मैं कहता हूँ नाम पे मत जाओ. Just develop the skill. Okay, just develop the skill and see the question and solve on the face value. ये कैट का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, लाइक 17-18 years ago. 7.
people are sitting left to right. Okay, A and G यहां से शुरू होता है. A and G have to blah 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 blah. ये important line है. So must be seated at the extreme right. So I will write like this: A oblique G, G oblique A. I could also have written A G and made an arrow. B will receive blah blah blah, so must be in the center. ठीक है, ये भी हो गया. B will receive this. C and D are bitter rivals, so they must be seated as far apart as possible. So now that you have placed A, G, and D, how far apart can you place C and D? Like this. This is also done. What else? Who is left? E and F are left. So E and F will occupy the remaining positions. And this is the best that we could do with the arrangement. We cannot ignore the ambiguity, okay? नहीं देखो पूजा, अगेन नहीं हो सकता है मेरी क्लास में. सिर्फ मैं आपकी सारी बात मानता हूं, बस एक चीज नहीं मानता. आई डोंट रिपीट. आप क्वेश्चन पूछो मुझसे, रिपीट करने को मत कहो. मुझसे पूछो क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं 10 बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मैं रिपीट भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है. लैंग्वेज तो आपको खुद समझना है. बताइए कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है. आई विल टेल यू. विच वर्ड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल. देखिए जो लोग नए हैं, आज तो ज्यादातर लोग नए हैं. आई विल टेल यू व्हाई आई एम अगेंस्ट रिपीटिंग. देखिए 2-3 रीजंस हैं. क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है ना. हिंदी में बोल रहा हूँ ये बात प्लीज, ताकि एक बार में समझ में आ जाए. डाइज इन अ रो कहाँ लिखा है? ऑन द डायस. इट्स नॉट डाइज, इट्स डायस. ठीक है, वो सब भूल जाओ. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, डायस इज लाइक अ पोडियम एंड ऑल, वो भूल जाओ. मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको ये समझना पड़ेगा. क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट. नाउ दे हैव यूज्ड अ फैंसी वर्ड, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यस कार्तिक, श्योर 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 श्योर. अभिजर ललानी, नो 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 नो. एज फार अपार्ट का क्या मतलब है? जितनी दूर रख सकते हो उतनी दूर रखो. तो आप उनके बीच में सिर्फ एक ही जगह क्यों छोड़ना चाहते हैं? लंचन का मतलब होता है लंच. जैसे आप दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाते हो कि चलो पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लंच करेंगे कहीं बाहर अच्छी सी जगह पे, रिसोर्ट में जाके. यू कॉल इट अ लंचन. ओके, इट्स अ ब्रिटिश वर्ड. फॉर्मल लंच सेरेमनी, यस. ओके, एनीवे. So I was telling you why I am against repetition is because people take undue advantage of it. जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को पता है. People take undue advantage of it. They don't listen properly, क्योंकि उनको मालूम है कि हम रिपीट बोलेंगे तो सर तो फिर तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे. दूसरी बात कि रिपीट तो मैं एग्जैक्ट वही चीज दोबारा कर दूंगा. अगर आपको पहली बार नहीं समझ में आई तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरी बार भी नहीं समझ में आएगी. Sometimes people need more time. So when I repeat, they get time. So it's not the repetition which is required; it is the time that you require. ठीक है. तीसरी चीज, people are busy reading, doing WhatsApp and all during their classes, and in between they miss their things, and then they ask me to repeat. So my idea is कि आप प्रॉब्लम बताओ. सर आपने ए और जी को ऐसे क्यों लिखा, ऑब्लिक क्यों लगाया, एरो क्यों नहीं लगाया, पी को बीच में क्यों रखा, सी को लेफ्ट में क्यों. यू आस्क दीज काइंड ऑफ थिंग्स, नॉट टू रिपीट. दैट इज अ टर्न ऑफ. ओके, चलिए. So this is the best we could do. And now let us try to answer the question. ये actual cat question है, बहुत पुराना है लेकिन फिर भी it's a good question. Which of the following cannot be? Please understand the language of the question. They are not asking you what is there. They are asking you what is not possible. So as you can see, a lot of these places have ambiguities except for the middle place. तो आपसे सिर्फ पॉसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. व्हाट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज पॉसिबल. सर्टेनिटी तो कुछ है ही नहीं. व्हाट इज नॉट पॉसिबल
at either end. So C is possible at either end, D is possible, G is possible, A is possible. C cannot be, D cannot be, G cannot be. So third option is the answer. Fine. Which of the following cannot be seated together? Again, cannot. Cannot be adjacent. Together, adjacent. So B and D, let us check B and D. So B and D is possible, as you can see. है ना? B and D is possible. This cannot be my answer. C and F. Okay. C and F is also possible, as you can see. E and A. E and A, not possible. E kahan, A kahan, not possible. This is going to be my answer. Well, we have got the answer, but still, D and G, if you want to see, so D and G are possible. So E and A are not possible only. Which of the following pairs cannot occupy seats on either side of D? Either side of D, F and D is possible, you can see. D and E. Okay, D and E is also possible. C and F. C and F is also possible. By the process of elimination, it has to be E and G, and you can see that E and G is not possible. This becomes the answer. हाँ जी, पूजा जी लग रहा है बुरा मान गए, इन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे दोबारा। पूछ लो भाई, रिपीट करने को मत बोलो यार, क्लास का टाइम बर्बाद होता है और आपको कोई फायदा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ मैं रिपीट करने से। आप अपना प्रॉब्लम पूछो। पहले एलआर इजी आता था, ऐसा नहीं है बेटा। देखो क्या है, कैट का जो नाम है ना, इतना ओवर हाइप्ड है, इतना बड़ा ब्रांड है। आप एग्जाम में जाओ, यही क्वेश्चन आ जाएगा आपसे वहां पे डबल टाइम में। ई एफ का सीटिंग प्लान समझ में नहीं आया, उसमें एक्चुअली समझने का नहीं था पूजा जी। क्या था कि व्हेन, जब हमने सारी चीजें मान ली, क्वेश्चन में लिखी हुई सारी चीजें मान ली, तो बस मेरे पास दो जगह बच गई थी, एंड देयर वर टू पीपल हु हैड नेवर बीन स्पोकन अबाउट, उनके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं था। तो फिर हम क्या करेंगे, ई और एफ को बिठा देंगे। हो सकता है इट कुड बी एफ ई लेफ्ट एंड राइट और ई एफ लेफ्ट एंड राइट, तो फिर वही किया। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कैट में। हाँ, reason is that now there is this obligation from the cat side that each set will have 4 questions. Last year to 6 questions be there. Okay, so now if this question is there, it has only 2 questions or 3 questions, a light question. तो 4 question बने, इस लाइक सेट भी तो बनाना पड़ता है ना, तो भारी सेट बनाना पड़ता है। While it is not that it is not cat level question, 2019 में there was an arrangement question which was this easy. I'm telling you, trust me. In question 3, immediate seats. Yes, either side मतलब अगल बगल। आपके अगल बगल कौन बैठा है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसी को बोलते हैं who are on your either sides. इसमें total number of arrangement Tarun Bharadwaj is asking, though it is not the question, but his question is valid, so I will do that. So one arrow is this, one arrow is this, and one arrow is this. So you can see 3 such lines. So 2 into 2 into 2, 8 arrangements are possible. Correct. Correct. अच्छा, मुझको एक बात बताइए, एवरीबडी प्लीज टेल मी, nobody here has done PNC. उत्कर्ष, फिलहाल you just memorize it,
that as many arrows you can see, as many times you will multiply 2 to itself. So if you see 4 such curves, you multiply 2 into 2 into 2 into 2. अभी बस याद करो. Everybody, when you will learn PNC, तो आप पहले 10 मिनट में समझ जाओगे कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं. You never add, you always multiply. हर्ष, आपको 10-15 मिनट का लैग जा रहा है क्या? आप हर वो क्वेश्चन 10 मिनट बाद पूछ रहे हो जो लोग पहले पूछते हैं, और मैं बता देता हूँ. आइदर साइड्स अभी मैंने 3 बार रिपीट किया. अगल बगल, आइदर साइड मतलब अगल बगल. So yes, it means immediate left and immediate right. See, this is why I am against repetition. लोग अपने में लगे रहते हैं, सुनते ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ. फिर जब उनको मन करेगा तो कहेंगे रिपीट कर दो. तो भैया ऐसा कस्टमाइजेशन तो नहीं पॉसिबल है. उसके लिए तो you will have to pay like 5,000 rupees per class, if that kind of. तो बताइए, if you are ready to pay that kind of amount, तो मैं आपके हिसाब से आपको घर आके पढ़ा दूंगा. चलिए, खैर, jokes apart, don't take it seriously please. Okay, when it comes to circular arrangement, then there are a couple of things. That are a little different from linear arrangement. For example, in a linear arrangement, there is extreme left corner, there is extreme right. But in a circle, you don't have extreme left, extreme right. Point number 2. In linear arrangement, you don't have people sitting in front of you. But in circle, it is possible that somebody is sitting opposite to you, in front of you. Okay. In seating arrangement, everybody's left hand side is on the same side. सभी का left इधर है, सभी का right इधर है. But in circle, it may be opposite. Now, for example, I am facing you. You are facing me. My left is your right, and your left is my right. Okay. So let me give you a small example. Okay, so if I make a circle and write P, Q, R, S, T, and I ask you to see it in clockwise order, how will you write? Will you write P, Q, R, S, T in clockwise, or Q, R, S, T, P, or R, S, T, P, Q, or S, T, P, Q, R? They are all same or not? सारे same ही order तो है. Are you getting it? They are all same. This is different from linear arrangement. Linear arrangement, there is only one order which you write from left to right. But in circle, there is no extreme left, there is no extreme right, there is no starting point, there is no ending point. आप किसी से भी उठा के चालू कर दो. There are only senses, either the clockwise or the anti-clockwise sense. So this works in our favor. ये हमारे favor में काम करता है. ठीक है? And the last thing that I want to tell you is, only in circular arrangement, immediate left is same as left, just left. This does not happen in linear arrangement. Linear arrangement mein I have told you 2-3 times that if it is written that A is to the left of B, it could be immediate left, or 2 places left, or 4 places left, or 10 places left. But in circle, we don't take left as distant left, because देखो खुद ही देख लो, S के लेफ्ट में अगर आप जाओगे, ज्यादा दूर जाओगे तो राइट में पहुंच जाओ. Go far left in a circle, you will go on the right hand side. So here, to avoid such confusion, left means immediate left. Okay, fine. Also, please understand that in a circle, for you, okay, somebody who is sitting in this position is the person who is facing like you. So if A is here,
A's left is your left, A's right is your right. If B is sitting here, B's left is your right and B's right is your left. क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, फटाफट देखिए इसको. Okay, so I will take the advantage. What advantage do I have? I can start from anybody because there is no starting or ending point. तो मैं किसी भी प्लेस को शुरू उठा के उससे शुरू कर सकता हूँ. So I'm placing B over here. Everything else will be related to B. Why did I decide on B? And why did I decide on this place? So you understand why I decided for this place is this place is very comfortable for me. इस प्लेस पे बैठने वाले का लेफ्ट राइट फ्रंट everything I can see from my own eyes. Why B only? Because see this. How many times has B been mentioned? B का सबसे ज्यादा रेफरेंस है, इसलिए. Okay, A and B are opposite to each other. So I can place one more. I can fill one more place. Okay. H is to the immediate left of B. Immediate left of B. And opposite to G. H is opposite to G. दो places और भर गए. ये भी हमारा अच्छा हो गया. D is to the immediate right of B. Okay, D is to the immediate right of B. एक लाइन और बची है. What? F is neither next to H nor next to G. F is neither next to H nor next to G. So there is only one place for F. Fine. Cool. Okay. All the lines have been exhausted. So we are forced to place E and C like this. सही है ना? Okay, now let us answer the question. Who is to the immediate right of A? बताओ, आप ही बताओ. Who is immediate right of A? Spurti. It's not G. आस्था अरोड़ा. It's not G. अपने आप को उस जगह रखो और देखो आपका लेफ्ट राइट क्या है. नहीं तो अपनी कॉपी घुमाओ और ए को नीचे लेके आओ, फिर देखो उसका लेफ्ट राइट क्या है. Okay, you have to place yourself in that person's position and see where your left and right are. Answer is F. For this person, this is the right. This is their right. F is the answer. Astha Arora and Spurti. F is the answer. Understood? Who is two places to the right of B? Okay, B के two places to the right of B is C or E. When you do not have an option which says C or E, you will say cannot be determined. Okay. Now, last question is a special question. एक लाइन में बताता हूँ. Whenever a question of a circular arrangement asks you to interchange the position of the opposite people, like in this question. Okay, it is asking you to interchange the positions of A and B, G and H, F and D, E and C. So listen carefully. Never do that.
Never ever do that, because even if you do that, it will not change anything. It will not change anything. Anything. The entire arrangement will remain intact as it is. जिसके लेफ्ट में जो है वो रहेगा, जिसके राइट में जो है वो रहेगा. You don't need to do this. This only wastes your time. So if each person interchanges his place with the person opposite to him or her, जो भी है, just ignore this line. Keep answering the question based on the arrangement that you have already made. Who is sitting to the immediate right of C? अरे C का खुद का ठिकाना नहीं है, उसका right क्या देखेंगे हम? Cannot be determined. Can't. Or you will say immediate right बोला है ना? It's either H or G. So you say H or G or cannot be determined. Okay, so you don't need to actually literally exchange the people. Fine. चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. No, third question cannot be theta. Theta question, in theta question, you can only fill in the numbers. Okay, not even the names. Theta में सिर्फ numbers आते हैं fill करने के लिए. Okay, one question I am showing you. Please see this. कशिश बत्रा. Theta जो है TITA, its full form is type in the answer. Okay, CAT में there are approximately 25%. Questions are theta question in which there are no options. The question is written, after that there is a space in which you have to fill in the numbers. So theta के response में हमेशा एक number answer होता है. It could be 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit number. Even in verbal, there are questions in which numbers are answers. It could be the option number और the order of options, something like पैराजंबल्स में आता है 3 2 4 1 ऐसे करके. पूजा सिंगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए 3 बॉयज 4 गर्ल्स, जो भी है 3 गर्ल्स. ये एक क्वेश्चन है, जस्ट दिस वन क्वेश्चन. अरेंजमेंट भी इसी में है, क्वेश्चन भी इसी में.
Okay, so we need symbols for everything. So boy के लिए मैं box बना रहा हूँ. So every boy's name is written inside box, and every girl's name is written inside circle. आकांक्षा, हाँ, टीटा क्वेश्चन में आप तुक्का मार सकते हैं बेहिचक. उसमें 0 मिलता है रॉन्ग होने पर, नेगेटिव नहीं होता है. करेक्ट. ओके, सो प्लीज सी हाउ हैव आई मेड दिस. इन्होंने पहली लाइन में लिखा था समर इज द ओनली बॉय who is sitting opposite to a girl. So I placed Summer here. Summer is placed opposite to a girl. Okay. And that girl is sitting on the left of Shama. Okay. So that girl is sitting on the left of Shama. Shama के left में ये लड़की है. That you can see. How did I place the other boxes and circles? So remember, Summer is the only boy sitting opposite a girl. That means no other boy girl are sitting opposite each other. Remaining two girls are sitting opposite each other, and remaining two boys are sitting opposite each other. तो समर के ऑपोजिट ये लड़की थी, शमा के ऑपोजिट भी लड़की होगी, तो बाकी दो लड़के होंगे वो भी ऑपोजिट ही होंगे ऑब्वियसली. दैट इज हाउ आई प्लेस द सर्कल्स एंड द बॉक्सेस. ओके, लेट मी सी. इफ समीर इज सिटिंग एडजेसेंट टू श्रेया, ओके, समीर इज सिटिंग एडजेसेंट टू श्रेया, दैट मीन्स समीर हैज टू बी दिस बॉय, बिकॉज दिस बॉय, इसके तो दोनों साइड हम जानते हैं. On the left there is Shama, on the right there is Samar. So he cannot be sitting on adjacent to Shreya. So this guy has to be Sameep. Now what about Shreya and Shilpa? Kahani khatam. We have read everything. There is nothing that we can do now. So we will write Shreya and Shilpa like this. Shilpa, Shreya like this. And now we can read the question. Shreya is sitting between Sameer and Shama. श्रेया इज सिटिंग बिटवीन समीर एंड शमा. हाँ, हो सकता है. देखो, श्रेया इज सिटिंग बिटवीन समीर एंड समा शमा. यस, दिस इज पॉसिबल बट नॉट डेफिनेटली ट्रू, इसलिए हम इसको पास कर देंगे. डेफिनेटली ट्रू नहीं है, पॉसिबल है. हाउ डिड आई प्लेस समीर? समीर के बारे में क्या लिखा है प्रियदर्शी क्वेश्चन में? समीर श्रेया के बगल में बैठा है, तो बिटवीन दी अदर टू बॉयज जो की जगह खाली थी, श्रेया के बगल में कौन बैठ सकता था? हाँ, तो श्रेया के बगल में कौन बैठेगा? ये लड़का समीप, ये जिसके जगह मैंने समीप लिखा है, ये तो श्रेया के बगल में था नहीं, ये तो शमा के बगल में था, समर के बगल में था. दैट इज हाउ आई प्लेस समीर. ओके, लेट मी मूव अहेड विद द ऑप्शंस. हाँ, सो दिस कैन नॉट बी माय आंसर बिकॉज इट इज पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी नहीं है इसमें. शिल्पा इज सिटिंग एडजेसेंट टू समीप. शिल्पा, शिल्पा इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू समीप. ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. ऊपर वाला कम से कम पॉसिबल तो था. दिस इज नॉट इवन पॉसिबल. शमा इज सिटिंग एडजेसेंट टू समीप. Shama and Sameep have no ambiguities. So nobody can change this. So C option becomes my answer. Absolutely. Shavik, Shilpa alone at the top? No. This is only a possibility. What you are saying is only a possibility, not certain. Not certain. भरत, किसको पॉसिबल बोल रहे हो भाई? बी को. शिल्पा सिटिंग एडजेसेंट टू समीप, कैसे भैया बताओ? समीप फिक्स्ड है.
उसके अगल बगल वाले फिक्स्ड हैं, तो हाउ कैन समीप बी सिटिंग एडजेसेंट टू समबडी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज सर्टेन, नॉट पॉसिबल. भरत, ऑप्शन सी आई मार्क्ड एज माय आंसर बिकॉज इट इज 100% सर्टेन, श्योर, नो पॉसिबिलिटी कि हाँ हो सकता है, कभी होगा कभी नहीं होगा. वो सर्टेन था इसलिए मैंने उसे आंसर मार्क किया. सिर्फ पॉसिबिलिटी पे आंसर मार्क नहीं करते, अनलेस क्वेश्चन आस्किंग यू ओनली द पॉसिबिलिटी. जैसे अभी वो वाला क्वेश्चन था कैट वाला जो हमने किया था, उसमें पॉसिबल पूछ रहे थे, व्हाट इज नॉट पॉसिबल. फाइन गाइस, आगे बढ़े. अदर पीपल, न्यू पीपल. देखिए क्वेश्चंस बहुत हैं, उसका कोई अंत नहीं है. मैं यहां पर डालू ना लीनियर, ये देखो कितने खुल के आ गए. लीनियर सीक्वेंसिंग, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, उसका कोई एंड नहीं है. तो आप एग्जाम्पल करते जाओ. अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे फटाफट सॉल्व करिए. श्रवण सेंगर, टफ क्वेश्चन आपने पूछा है, बट माय आंसर वुड बी यस. But when it comes to reasoning, Shravan, and through your question, I'm telling everybody else, when it comes to reasoning or language, these two things, you cannot depend on anybody's classes. So आप उनसे सजेशन लीजिए, आप उनकी क्लासेस में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस या पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे डिपेंड मत करिए कि यही है, इसी से मेरा एग्जाम पार होगा. नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, भगवान भी आके आपको 40 क्लास खाली पढ़ा के चले जाए ना, और आप वो 40 क्लास पे डिपेंड कर रहे हो, ये 40 क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, खाली उससे नहीं होगा. When it comes to reasoning and language, you have to develop a knack, crack the questions. Okay, you should seek mentorship, the tips to grow in these areas. Okay, not only depend on the questions, the types that I have told. खाली उससे तो एग्जाम क्रैक नहीं हो. हाँ, क्वांट हो जाए, क्वांट हो जाए. क्वांट में भी कवर एवरीथिंग, मतलब उसके पार कुछ नहीं आ सकता. लेकिन रीजनिंग का कोई एंड नहीं है, और छोर नहीं, कोई सिलेबस नहीं है. रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता, लैंग्वेज का कोई सिलेबस नहीं होता. How many classes are there for arrangement and ranking? There is only this one class for you guys. And if you are talking about videos, there are I think 3 to 4. Seating arrangement, circular arrangement, the distribution, double liner, and ranking and arrangement के नाम से भी है. So 3 to 4 videos you can find in the repository. बहुत बढ़िया, लोगों ने आंसर भी निकाल दिया. क्लास 6 बजे से है, मैच देख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, एंडिंग छूट जाएगी. एंडिंग में ही मजेदार होता है मैच. मैच में देखता नहीं हूँ आजकल. मैंने हॉबी ही डेवलप नहीं किया इस साल मैच का, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं ज्यादातर नहीं देख पाऊंगा. माय डैड वॉचेस इट. एनीवे, so guys, how will I solve this question? Okay. A plays neither football nor badminton. That means he plays cricket or chess. B plays cricket or football. C plays football or chess.
and D plays neither cricket nor chess, that means badminton or football. Okay. Now, if you see that everybody has two choices, but you also know that badminton must be played by one person, and you can see that badminton is a choice only with one person. You just imagine if this guy D does not choose badminton, instead chooses football, then badminton is not even in the choice of anybody else. Badminton then will not be played at all, which forces me to think and to accept that D has to play badminton. Understood? Understood? This is all I had to say. Now you ask me problem, if there is. Otherwise, I'm showing you the next question immediately now. हाँ, मुझको लग ही रहा था पूजा, आपने पूछा भी नहीं। बताइए क्या नहीं समझ आया, बताइए जल्दी बताइए पूजा फिर। If you want, I can unmute you also if typing is a problem. Where is it mentioned that badminton will be played by one person only? Shravan, your question tells me that you are not a reader and not an acute reader anyway. ये देखो, ये देखिए, मैंने जो हाईलाइट किया है, और ये देखिए, Priyadarshi, good question. No, we cannot find about A, B and C. फर्स्ट लाइन नहीं समझ में आई ABCD की? हर कोई सिर्फ एक एक गेम खेलेगा और क्या? आसान तो है। उसमें लिखा है हर कोई सिर्फ एक गेम खेलेगा और हर गेम सिर्फ एक ही आदमी खेलेगा, मतलब एक्सक्लूसिव है। अगर किसी ने क्रिकेट खेला तो दूसरा बंदा क्रिकेट नहीं खेल सकता, और ये भी बात सच है कि कोई ना कोई तो क्रिकेट जरूर खेलेगा। ये लिखा हुआ है। बेसिकली इट्स अ सुडोकू काइंड ऑफ सिचुएशन। सुडोकू में ऐसा होता है, हर नंबर आएगा भी और एक ही जगह आएगा। श्रवण बाबू एंड एवरीबडी एल्स हु हैज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कैट के क्वेश्चन में कम शब्दों में ज्यादा लिखा होता है। आपको वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि आप कम शब्दों में ज्यादा समझ पाए, बिटवीन द लाइंस व्हाट इज देयर रिटन, आपको समझना पड़ेगा। पूरा ग्रंथ आपको नहीं लिख के देंगे ना छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए, आपको कम में ज्यादा समझने की आदत डालनी चाहिए। चलिए, दिस क्वेश्चन,
हाँ जी, आ गया आंसर। हर्ष, नहीं। रोहित, नो। इट इज ऑप्शन सी, पर्सन बी। ओके, हाउ डू वी सॉल्व इट? इन क्वेश्चंस में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, देयर इज नो टेक्निकल्स इन दीज क्वेश्चंस, इट्स प्योर प्योर थिंकिंग। ओके, and little bit of easiness, ease of writing and thought. A did not marry C or E. Then A could have married B, D, F, है ना? The only possibility B or D or F, all are in the option. C तो possible ही नहीं है. Okay, B did not marry E or F, so B could have married A, C or D. Nikita Sharma, right? Hmm? Now C married A or D. Now let us see. Please understand, it's marriage, इट्स नॉट लव, जो एक साइड से हो दूसरी साइड से रेसिप्रोकेट नहीं भी हो तो भी चलेगा। इट्स मैरिज, इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट ए की लिस्ट में बी का नाम है। ओके, इन एज लिस्ट देयर इज बी, इन बीज लिस्ट देयर इज ए, सो दे बोथ कुड बी पॉसिबल, दे बोथ आर पॉसिबल। ओके, इन सीज लिस्ट देयर इज ए, in C's list there is A, but in A's list there is no C. There is no C. That means C cannot be married to A. C can be married, therefore C can be married only to D. One pair fixed. One pair fixed. Now that we know that C and D are married to each other, we have to strike out the names of C and D from everybody else's list. C and D have to be struck off. उनका नाम काट देंगे दूसरों की लिस्ट में से, बिकॉज उनका तो हो गया बुकिंग। नाउ वी गेट टू नो दैट बी एंड ए आर मैरिड, दैट्स इट। वी गेट टू नो हु इज द स्पाउस ऑफ ए, बी इज द स्पाउस ऑफ ए। क्या प्रॉब्लम था इसमें? ठीक है ना? एनीबडी एफ से स्पाउस? अब आप बताइए। सी की शादी डी से हो गई, ए की शादी बी से हो गई, तो एफ का स्पाउस कौन हो गया? ई हो गया। वी कैन फाउंड एवरीबडीज स्पाउसेस हियर। प्लीज डोंट आस्क मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी व्हाट डू यू नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, A does not marry C or E means A did not marry either of them. Neither of them. A married neither of them. It means A married neither of them. ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो अभी कैट क्वेश्चन करते हैं, है ना? कैट का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, ये कैट 2000 में आया हुआ क्वेश्चन था।
and let me copy the question also. Yes. अलग अलग अब देखने की जरूरत नहीं है, आपने एक क्लास अटेंड कर लिया है. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन शॉर्ट. इफ यू कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस क्लास यू डोंट नीड टू पर्टिकुलरली सी दी अदर वीडियोस, क्योंकि वो स्लो है ना. तो आपका इसको देख के काम चल जाएगा. आपकी इच्छा है, आपके पास खूब टाइम है तो आप देखो जाके आराम से, लेकिन अब आप सीधे क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हैं. लिटिल बिगर. श्योर. ये लो. बेटर. नहीं 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 पूजा, यू डोंट नीड टू वॉच. अगर आप ये क्लास में प्रॉब्लम हुई है ना, अगर आपको लगा कि यार ये मेरे ज्यादातर चीजें मेरे बाउंस हो गई, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप देखिएगा, क्योंकि वो क्लासेस काफी स्लो थी. हम्म. तो मेजरली 90% केसेस में जब क्लासेस बाउंस हो रही लगती हैं तो उन लोगों को एक्चुअली टाइम चाहिए होता है. तो उनका प्रोसेसर राइट नाउ स्लो है, धीरे धीरे आ जाएगा लाइन पे, तब आप वो क्लासेस जाकर देख सकते हैं. ठीक है, तो उसमें थोड़े एक दो क्वेश्चन ज्यादा हैं, बस इतना ही है. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस आल्सो, अगर आपको ज्यादातर चीजें समझ में आ गई क्लास में. मानसी जैन ने देखो आंसर भी दे दिया. बहुत बढ़िया. मानसी, वेरी गुड. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. महक सचदेवा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. प्रणव, करेक्ट आंसर. बाय द वे प्रणव, यू डिड नॉट बिलोंग इन दिस क्लास. आप नहीं करते. had you not attended this you would have still done okay. but ठीक है. नहीं, जस्ट मेक अ टेबल पूजा, जस्ट मेक अ टेबल एंड. सलूजा, करेक्ट आंसर. रमेश गुप्ता, करेक्ट आंसर. हर्ष, हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट के नाम पे जो भी क्वेश्चन मिलेगा सब कर सकते हो. उत्कर्ष, करेक्ट. तौहीद, करेक्ट. प्रियदर्शी, करेक्ट. करेक्ट. ओके. चलो, लेट मी जस्ट सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट. 5 persons, PMUTX. PMUTX. They live in hut, fort, house, palace, jungle. नहीं, होटल, सॉरी. I said jungle, sorry. हाँ. Each likes two different colors. You likes red and blue. Okay. You likes red and blue. अच्छी बात है. He likes black. He likes black. He likes blue and red. Okay. M likes yellow and X lives in a hotel. Okay. Now there is a line which says the person living in a palace does not like blue or black. Now look at this. Does not like blue or black. Similar statement was there in the previous question also. Is not married to C or ऐसे करके C or E. और में और के पहले अगर नॉट लगा मीन्स नो टू बोथ.
है ना? So person living in a palace does not like black or blue, neither black nor blue, black भी नहीं, blue भी नहीं. Okay, so palace, I cannot write palace here. I cannot write palace here. I cannot write palace here. This has already been filled. So there is only one place I can write palace. So I know where M lives. And that was the intent of the question. Pucho, problem. I cannot find anything else. Who lives in a hut? Who lives in a fort? Who lives in a house? I have no idea. But who lives in a palace? That I know. Okay? ये कैट का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, जैसे आप देख रहे हैं 21 साल पुराना क्वेश्चन है, 21 years ago. Most of you were not born then, is it? नहीं, not most, a lot of you were not born then. So, so even old cat questions are important to solve for two reasons. एक, despite being easy, they develop a skill. See, even this question was not direct. ऐसा सीधे लिख के नहीं आ गया आपको. आप because of elimination and this is not possible, that is not possible, because of a lot of binary logic, you could place M into palace. Okay, so even these questions have certain skills. Secondly, it will give you a lot of confidence that you solved a cat question, even if very old. Third, that very relevant. These questions are very relevant. You can see that they do not take a lot of time. If you are taking a lot of time in solving a cat question, that means you are not fully equipped. And fourth, जो भी है point, that a lot of other exams just copy cat questions. So a question like this can be made. बस वो यही क्वेश्चन रखेंगे, बस उसका नाम चेंज कर देंगे. कैट कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ पता नहीं, बट आई हैव क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम 1990. 1990 के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करो, 90, 91, 92, 93, 94, and you will have like thousands of questions. What was the answer of the second last question? Who was the spouse of A? B was the spouse of A, Apurva Pandey. B was the spouse of A. All recorded video of all chapters of CAT Quant available on portal. Yes. Every class that happens live is also recorded and is always uploaded on the portal. Is this a CAT level question? Mia, this is a CAT question. Level का क्या होता है? ये देखो, ये है क्वेश्चन. देखो क्या लिखा है, CAT 2000. समझे ना? अब यही CAT 2000 में देखो ये क्वेश्चन भी आया था. इसमें बैंड बज जाएगी आप लोगों की. करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है? अरे नहीं आएगा तो नहीं करोगे क्या? सीधे टफ ही क्वेश्चन करोगे? ये बताओ. टफ क्वेश्चन होगा नहीं, इजी क्वेश्चन आप करोगे नहीं, तो फिर कहाँ जाओगे? ये बताओ. नहीं नहीं, वो नहीं पॉसिबल है श्रवण. दिस इज नॉट माई इंस्टीट्यूट. हाउ कैन ऑल द क्लासेस बी ऑफ मी? ऐसा नहीं है. नहीं, ऑल द क्लासेस आर नॉट ऑफ मी. बट यस, इन पास्ट मेनी ईयर्स, यू नो, हर क्लास मैंने किसी ना किसी बैच, किसी ना किसी ईयर में तो लिया हुआ है, तो मेरे पास कलेक्शन है वीडियोस का. बट आपको शायद चुनिंदा क्लासेस मिलेंगी. नाउ इट मे बी पॉसिबल दैट in certain topic I might not have done the basics but I have done advanced. In other topic I might not have done advanced but I have done basic. ऐसा हो सकता है. How many questions will come in CAT from arrangement? Sanket, I sincerely wish that I knew the answer to this question. I would not need to teach live classes because I would charge lakhs of rupees from everybody to be able to tell them किस topic से कितने questions आएंगे. Answer is don't know. Nobody knows. Maybe two questions, maybe two sets, maybe no question. You never know यार. कुछ नहीं कह सकते. But it is a very important topic. Past many years, I think at least I have seen at least one set on arrangements. At least one set on arrangement every year.
नेटवर्क डायग्राम क्या होता है पहले ये तो पता चले, तब तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेक्स्ट क्लास प्रियदर्शी, वी आर डन। यस, बाय बाय, सी यू एट 6। सुमित नॉट इन दिस क्लास, डाउट क्लास अलग से होगी, उसमें करेंगे। चलो बाय बाय।